Good morning, friends. Yes, friends, we are on illustration number 2 and we have started the topics. Right? We are left with the adjustments now. Okay, so let's see that. The first is the prepaid insurance. So, where we have to deduct the prepaid insurance, we have to go to profit and loss account. You can see insurance premium is minus prepaid, right? 200. So, outer column comes to how much? 200. Outer column comes to how much? 800. That 200 is to be transferred to where account? Balance sheet asset side. So it comes to balance sheet asset side. We can see prepaid insurance on asset side, that is 200. After prepaid insurance, we can see that the next topic comes to you. J withdrawn goods of rupees 2000 from the business for his personal use. He is withdrawing the goods for his personal use. That is the drawings. Clear? So what we have to do now? We have to deduct it. We have to deduct it from purchases. But we don't have purchase right now. So there will be one information in point number 3. In point number 3, what they are mentioning? Goods of 4000 purchased on credit, which is not recorded in the books. So that is what our unrecorded purchases. That is our unrecorded purchases. And after that, we have to do minus drawings. Now, what is unrecorded purchases? Unrecorded purchases means it is not recorded in the purchase. That's why we have to record in here also, as well as we have to record on where we have to record. We have to record on in creditors. So creditors 4000. Already creditor has been come 12,000. Vijay's loan we have done. Outstanding interest all we have learned in the last period. Okay. So unrecorded purchases we have done. After that, what we have learned, the topic is J withdrawn 2000 for his personal use, right? So we have deducted 2000 from here, as well as it should come in one side also, where it should come in partner's current account debit side, two drawings. Right? Already we have seen balance brought forward, already we have seen balance brought forward. So here comes the drawings 2000. Okay. So, little bit confusing. Again, I am repeating. J has withdrawn 2000 from business for personal use. When goods of 4000 purchased on credit on 28/3/17, which is not recorded in the books. So 4000 we have to record on the debit side. Unrecorded purchases 4000, and then we have to deduct with the drawing. That 4000 is unrecorded. That's why we have to add in creditors, right? That 4, and after that we have to do 2000 is to be written on the current account. Next is write off 400 as bad debt and provide 5% bad debt reserve. The normal point is there. So we have to go to debtors. In debtors we have to do what? Minus bad debt 400 minus bad debt reserve adjustment 900. So bad debt reserve 400, bad debt reserve 900. These both are expense to me. So I have to transfer to which side? I have to go to P&L account. Bad debt new 400 and bad debt reserve new 900. Okay, that we have to do. After that, there is no need of discount reserve on data. So friends, already we have seen that. Last point is provide 20% depreciation on plant and machinery and 5% on furniture and fitting. So come to plant and machinery, yes, 20%. Come to furniture, 5%. That we have to deduct and we have to transfer to which side? Profit and loss debit side. Here you can see depreciation on furniture 4000 and depreciation on furniture 2. So friends, every point is clever now. Let's see the sum now. Come to revised trading account. Ready? Take your calculus with you. Now make the total of that. That is 30,900 on the credit side. 30,900 on the credit side. The same total should come on the debit side. That is 30,900. 30,900.
then deduct it. Done the minusing, you will get this 2000 and 6000. And after that, you get this particular answer, that is 22,900. You will get 22,900. Now, what is that? That is revised gross profit. That is revised gross profit. And after that, what we have to do? We have to transfer that in P&L account. All of you are done up to here? Okay. So I'm waiting for 1 minute. Complete that. 22,900. It is known as revised gross profit that we have to transfer in profit and loss account. That is 22,009. Now, friends, you can see here they are not prepared P&L appropriation. If you want to prepare P&L appropriation, that also we can prepare. So here they have not prepared. It's okay, no problem. So here we have done the total. Now here the debit side is total is no. So first of all, we have to do the total of debit side. We have to do the total on that side, which is no. Here debit side is no. So debit side total comes to 26,550. The same total I have to write here on the credit side also, 26,550. Right? Then deduction to be done. And after reducing everything, I get this particular figure, that is 3270. Yes, 3270 I am getting. So that I can give the name by divisible loss. If I am preparing P&L appropriation, I can give the name by net loss. If I am preparing P&L account only, I have to give the name partners current account divisible loss. Partners का नाम है J and Vijay, an equal ratio 1635 163. Okay, friend. And that we have to transfer to which account now? Partners current account. In partners current account, you can see that profit and loss 1635 1635. Then the same part, the total and the deduction. So J total, it comes on the credit side is moved. So make the total of J on the credit side. It comes to 20,000. That 20,000 we have to write here, the same 20,000. Then we have to minus it. If your deduction, we get 16,365. 16,365. Clear? And then comes Vijay. Vijay's make the total, you get the total of 6635. 6635. The same total we have to write on the credit side, 6635. Now deduct it, you get this balance, 6635. Now, you know the rule. What is the rule? If the balance is on debit side, you can see the balance is on debit side, you have to write directly to the liability from down. जहाँ है उसके नीचे. So in balance sheet liability, you can see the name current account of J, and the amount you can see 16365. 16365. Clear. Now comes the balance of Vijay 6635. That also same. Here also it comes to the current account. The last I think there, yes, current account of wherever the balance is there, we have to count. Now make the total. Do the total. I'm waiting for you. Done. The total should come is 203,265. What is the total? 203,265. That is the total. So again a short revision, whatever we have learned. It's very easy question. So where we have to write, just remember, capital account of JVJ. Where we have to go? Yes, capital account. Current account of JVJ. Where we have to go? Current account.
Closing stock, only one point is there. Asset. Trading account. Trading account we can give two names. That is by gross profit also or by balance brought forward. If we have to prepare revised trading account, we can give balance brought forward. And it comes on the credit side. Okay. Cash on hand. Asset. Current account with bank. Asset. Fixed deposit with bank. Asset. Debtors. Asset. Salary. Profit and loss. Freehold land. Asset. Plant and machinery. Asset. Furniture and fixtures. Asset. Furniture on lease. Asset. Loan of partner Vijay. Liability. Discount is not required. What we have to do? We have to write on credit side. Bad debt reserve. Profit and loss. Insurance premium. Profit and loss. Printing and stationery. Profit and loss. Creditors. Where we have to write, friends? Creditors. Liability. Bad debt. Profit and loss. Advertisement expense. Profit and loss. Traveling expense. Profit and loss. Adjustment. Prepaid insurance. इंश्योरेंस में से क्या करेंगे? माइनस. और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड. Next one. J withdrawn goods of 2000 from the business for his personal use. तो क्या करेंगे? परचेस में से माइनस. इसलिए हमें थर्ड पॉइंट पहले करना पड़ेगा. 4000 रुपए उसमें से 2000 माइनस और वहां से हम ट्रांसफर करेंगे. पार्टनर्स करंट के डेबिट में टू ड्रॉइंग्स लिखेंगे 2000 और क्रेडिटर्स में 4000 प्लस करेंगे. फोर्थ है राइट ऑफ 400 एज बैड डेब्ट एंड प्रोवाइड 5% BDR. बराबर. तो डेटर्स में से माइनस बैड डेब्ट और BDR वो भी माइनस कर देंगे. ठीक है. देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स. तो डिस्काउंट रिजर्व की जरूरत नहीं है, इसलिए क्रेडिट. 20% depreciation on plant and machinery and 5% of तो प्लांट एंड मशीन में से भी क्या करेंगे? माइनस. और फर्नीचर में से भी क्या करेंगे? माइनस. और दोनों को कहां करेंगे? ट्रांसफर. बराबर. दोनों को हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर. तो फ्रेंड्स ये अपना टॉपिक है. रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने तैयार किया. राइट. स्पेसिमन बराबर ध्यान रखना है. पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने बनाया और बैलेंस शीट बनाया. ओके. चलो. तो ये टॉपिक फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ. अब आगे बढ़ते हैं तो इलस्ट्रेशन नंबर 3. एक बार आप रीड कर लो. देखो कौन सी चीज कहां जानी चाहिए, फिर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ यश एंड जस्ट एज ऑन 31 मार्च 17 ऐसा बोला. बोलो. कैपिटल यश एंड जश. कैपिटल. सप्लायर का मतलब क्रेडिटर्स. कहां लिखना है? लायबिलिटी. सेल्स कहां लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट. बिल पेएबल कहां जाएगा? लायबिलिटी. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस. बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लाएंगे? लायबिलिटी. गुड्स रिटर्न क्रेडिट में दिया हुआ रिटर्न है. कौन सा रिटर्न मानेंगे इसको? परचेज रिटर्न. रेंट रिसीव्ड इनकम. डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम. बैड डेट रिजर्व कहां जाएंगे? राइट. बैड डेट रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कहां जाएंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में से माइनस. आउटस्टैंडिंग वेजेस बाकी है देना, तो ये भी लायबिलिटी. फिर है ड्राइंग्स. अब ड्राइंग जरा सोचो. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग. कस्टमर्स डेटर्स कहां लिखना है? एसेट. परचेजेस. परचेजेस कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग. वेजर्स
ट्रेडिंग, बिल रिसीवेबल एसेट, 6% इन्वेस्टमेंट, अब इसमें पॉइंट आएगा 1416 बोला है ना, इसमें एडजस्टमेंट लगेगा, एसेट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैलेंस कहाँ जाएगा, एसेट, डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस, गुड्स रिटर्न कहाँ लिखना है, सेल्स में से माइनस, बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, मोटर कार एसेट, बिल्डिंग एसेट, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस वो भी कहाँ जाएगा, एसेट। एडजस्टमेंट देखते हैं, interest at 5% on capital and 10% drawing for 6 months. Capital बोलो, interest on capital कहाँ लिखेंगे, P&L appropriation के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखेंगे, P&L appropriation के क्रेडिट में और बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट से। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का है, लेकिन मार्केट में वैल्यू कितना है उसका, 12,000, कितना लेंगे, कम वाला 12,000, कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 500, स्टेशनरी में क्या कर देंगे, प्लस, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी। प्रीपेड वेजेस में से क्या करेंगे, माइनस, और बैलेंस शीट के एसेट। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200 एंड डिस्काउंट रिसीवेबल 40, रेंट एडवांस में मिला है, तो रेंट में से क्या करेंगे, माइनस और ट्रांसफर। रिसीवेबल मिलना बाकी है, तो डिस्काउंट में क्या करेंगे, प्लस, और प्लस करे तो सेम साइड। डेटर्स ने बोला है कि 1,000 रुपीज बैड डेट, 5% बैड डेट रिजर्व एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व। डेटर्स में से बैड डेट भी क्या करेंगे, माइनस, बैड डेट रिजर्व भी क्या करेंगे, माइनस, और डिस्काउंट रिजर्व भी क्या करेंगे, माइनस, और तीनों को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, P&L के डेबिट साइड पर, स्पेसिमेन है ना उसके। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार पे आप डेप्रिसिएशन, तो मोटर कार पे भी हम माइनस करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। गुड्स वर्थ ₹2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, खराब हो गया सामान, और इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देगी, 80%, तो एसेट में हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी का 80%, यानी 2,000 का 80%, 1,600 रुपए, और 400 रुपए हमें नुकसान हुआ है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू लॉस ड्यू टू फायर। और गुड्स गया अपना 2,000, वापस बोल रहा हूँ, 2,000 का गुड्स गया, ट्रेडिंग में परचेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। एसेट में इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे 1,600 और लॉस ड्यू टू फायर 400। 10% commission is payable to Yash from the profit after deduction of commission from profit, ये अलग पॉइंट, कमीशन देना है आपको उसको, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो प्रॉफिट होगा उस पे कमीशन, लेकिन क्या वर्ड बोला है, आफ्टर डिडक्शन। जब ये पॉइंट आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अकाउंट्स रेडी है आपका, तैयार करो। ट्रेडिंग अकाउंट 7 लाइन्स, ट्रेडिंग अकाउंट 7 लाइन से नहीं होगा, सॉरी 10 लाइन्स, ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाइन्स, 10 लाइन छोड़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, one side, profit and loss account, one side, profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account, 10 lines, partners capital account, 7 lines, 7 lines, balance sheet। चलो रेडी करो, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, कॉलम तैयार करो जल्दी से।
चलो रेडी कर लो, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में हम ये सम करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।